Now let us take a left hand side. Cot theta minus tan theta. Since we are not having any square, there is no chance of using identities. You can convert cot and tan into sine cos. So cot theta can be written as cos by sine. Tan theta can be written as sine by cos. After converting into sine cos, try to take LCM. Cos into cos is cos square theta minus sine into sine is sine square theta by sine theta cos theta. Got it? Now we already got the denominator. So we need to get sine cos. We already got the denominator. So we need to get numerator. In the numerator we are having cos. In the numerator we are having cos. So this sine square should be converted into cos. We have an identity. First identity, sine square theta plus cos square theta is equal to 1. Sine square can be written as 1 minus cos square theta. So I am writing this sine square as 1 minus cos square theta because in the RHS I don't have any sign. RHS में साइन नहीं है तो साइन को चेंज कर दीजिए. तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? cos स्क्वायर एज इट इज लिखना है. cos स्क्वायर एज इट इज लिखना. डिनोमिनेटर एज इट इज लिखना है. साइन थीटा cos थीटा एज इट इज लिखना है. माइनस एज इट इज लिखना है. साइन स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे आप? 1 minus cos square. Whenever you have minus, you should put bracket. जब भी आप माइनस है और दो टर्म्स है तो फर्स्ट थिंग आप ब्रैकेट रखिए, प्रोटेक्ट करिए. विदाउट ब्रैकेट नहीं लिख सकते आप. ब्रैकेट रखना है. ब्रैकेट ओपन करे वक्त क्या होता? साइंस चेंज हो जाते हैं. अब ब्रैकेट ओपन करिए. cos स्क्वायर थीटा. अब देखिए ये +1 होगा. प्लस इंटू माइनस -1. ये माइनस कॉस क्या होगा? माइनस इंटू माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई sin थीटा cos थीटा. अब cos स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बाई sin theta cos theta. That's how we got our RHS, hence proved. So in this problem he is asking us to prove tan theta minus cot theta is equal to 2 sin square theta minus 1 by sin theta cos theta. Let us take left hand side. In the left hand side we are having tan theta minus cot theta. Convert tan and cot into sin cos. Write tan and cot in terms of sin cos. Tan theta is sin theta by cos theta. Cot theta is cos theta by sin theta. Take LCM. Sin into sin. Sin square theta. Cos into cos. Cos square theta by cos sin is not, cos into sin is nothing but sin cos. Now if you notice we already got the denominator. In the denominator, in the RHS we are having sin into cos. We already got the denominator. So if you notice here there is no cos in the numerator. Numerator में
कॉस नहीं है तो ये कॉस को चेंज करिए, आइडेंटिटी यूज करिए, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करिए। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So cos square theta is 1 minus sin square theta. So cos square theta के बदले में आप क्या लिखना है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखना। क्यों लिखना? RHS में cos नहीं है तो cos निकाल के साइन इन टर्म्स ऑफ साइन लिखिए। टू टर्म्स है और माइनस भी है, ध्यान से देखिए, माइनस भी है, टू टर्म्स है तो ब्रैकेट कंपलसरी है। एक टर्म है तो ब्रैकेट का जरूरत नहीं है। जब टू टर्म्स है डेफिनेटली ब्रैकेट मेंटेन करना है। sin theta cos theta denominator, when you open the bracket, plus 1 will become minus, minus sin square will become plus, minus into minus plus. So let's write sin square theta minus 1 plus sin square theta by sin theta cos theta. Okay, this is square, please note. Now sin square plus sin square is 2 sin square theta minus 1 by sin theta cos theta, which is equal to RHS. We have taken left hand side and we got right hand side. So in this particular problem, he is asking us to prove 1 plus tan square theta by 1 plus cot square theta is equal to 1 minus tan theta by 1 minus cot theta whole square. So let us take left hand side. 1 plus tan square theta by 1 plus cot square theta. We have the identity secant square theta minus tan square theta is equal to 1. Transpose tan square. Secant square theta is equal to 1 plus tan square theta. Similarly, cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. Cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta. So 1 plus tan square theta is secant square theta. You can see here 1 plus cot square theta is cosecant square theta. So this is the simplification of left hand side. From now we will take right hand side and again simplify it and check whether we are getting this one or not. So let's take left hand side now. Sorry, right hand side. What I mean to say, we have simplified left hand side. Now we will take right hand side and simplify and check whether we are getting same thing or not. So what is right hand side? 1 minus tan theta by 1 minus cot theta whole square. Inside the bracket, convert tan. Tan can be written as sin by cos. Again convert cot. Cot can be written as cos by sin. Whole square as it is. Now try to take LCM inside the bracket. Cos 1 za cos theta. 1 sin za sin theta by cos theta. Sin 1 za sin theta. 1 cos za cos theta by sin 1 za sin theta. Okay, so here
both are in different order. Here cos minus sine and here sine minus cos. In this case we can take minus common. So we will write cos theta minus sine theta as it is. But in the here I am taking minus common. So when I take minus common, this minus cos will become plus cos. And this plus sign will become minus sine by sine theta. So don't forget to put whole square. We are having, from the beginning we are having whole square. Here also you have whole square. Now cos minus sine and cos minus sine will get cancelled one time. So what is remaining? 1 by cos. 1 by cos theta by, we are having minus, so minus 1 by sine. Minus 1 by sine whole square. 1 by cos is secant theta. 1 by sine is cosec theta. Don't forget to write minus. Separate the squares. Secant square theta minus cosecant theta whole square. When you square, this minus will go minus into minus, it becomes plus. So left hand side simplification. This is left hand side simplification, that is secant square theta by cosecant square theta. Right hand side simplification also secant square theta by cosecant square theta. So we can write here LHS is equal to RHS. In few problems we need to take both left hand side and right hand side and simplify them. So in this particular question, they are asking us to prove that secant minus tan by secant plus tan is equal to cos square A by 1 plus cos sine A whole square. Let us take left hand side. In the left hand side, we have secant A minus tan A by secant A plus tan A. As we are not having any squares in the left hand side, we can't use any of the identities. So the best thing we can do is convert secant and tan in terms of sine cos. So secant is 1 by cos. Tan is sine A by cos A. In the same way, write down secant as 1 by cos A tan sine A by cos A. Now let's take LCM. So what is the LCM here? LCM of cos and cos is cos. And we will get 1 minus sine in the numerator. In the same way, LCM of cos and cos is cos. We will get 1 plus sine A. Cos A and cos A will get cancelled. 1 minus sine A by 1 plus sine A remains. So we did not get our RHS. What is RHS? Can you tell? Cos square A by 1 plus sine A whole square. Please think, when can I get 1 plus sine A whole square? मेरे को डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर कब आ सकता? क्या मल्टीप्लाई करे तो आ सकता? मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए डिवाइड विथ 1 प्लस साइन ए, ये मल्टीप्लिकेशन करने से मेरे को
डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर आ सकता। जनरली रेशनलाइजेशन में आप प्लस रहा तो आप क्या लेते, प्लस रहा तो ऑपोजिट साइन लेते, मगर यहाँ पर रेशनलाइजिंग न्यूमरेटर कर रहे हैं आप, क्यों 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करें, आपको यहाँ पर देखना पड़ता, आरएचएस को चेक करना पड़ता है। आरएचएस में 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर है तो ये आना बोले तो आपको मल्टीप्लाई डिवाइड क्या करना पड़ता, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ता। अब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, क्या फॉर्मूला याद आ रहा है यहाँ पर, ये कौन से फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ a minus b into a plus b, can be written as a square minus b square। सो यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये दोनों डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर करे, दोनों सेम है तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी चेक करिए, फर्स्ट आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर को ट्रांसपोज करिए, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप कॉस स्क्वायर ए लिख सकते, यहाँ पर है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वो हो गया कॉस स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। सो वी गॉट अवर राइट हैंड साइड, दैट्स इट। Let us do this problem in another method. I'm showing you second method of solving this problem. I would like to take right hand side and get left hand side. So what is right hand side? Cos square a by 1 plus sin a whole square. Cos square a can be written as 1 minus sin square a by 1 plus sin a whole square. 1 square is 1, so this 1 can be written as 1 square. 1 square 1 each है तो 1 को 1 square लिख सकते हैं आप। अब ऐसा लिखने से ये कैसा दिख रहा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्म में एक्सपैंड कर सकते, तो ये टर्म को एक्सपैंड करिए, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को एक्सपैंड करें तो a प्लस बी 1 प्लस साइन a minus b 1 minus sin a, denominator 1 plus sin a whole square, x square, or this term will get cancelled by, because we have multiplicative sign we can cancel. So what is remaining, 1 minus sin a by 1 plus sin a. Now what I would like to do is I want to divide each term by cos a. On dividing each term by cos a, we are going to get 1 by cos is secant, sin by cos is tan, 1 by cos is secant, this is plus, sin by cos is tan. So by taking RHS we got left hand side. So this is the second method in the